So in the previous class, we discussed about hormones, and we discussed about endocrine gland, which secretes the products, and they are called these secretory products are called hormones. So here in this diagram, I have written all the hormones, not all, but five hormones I have written, and then I'll put all the hormones here, and then these are respective functions of these hormones and some disorders. So you need not just forget about this part, just focus on this. So here is this adrenaline, which is secreted by adrenal gland of kidney. It secretes this adrenaline, and it's also called a triple F hormone, fight, fright, and flight. It's also called a triple F hormone, and it is released during emergency. So the mechanism goes like, so it prepares body for fight, flight, and fright. Now, if there is this deficiency of this adrenaline, it will lead to a disease that's called Addison's disease, or adrenal insufficiency. Means there is insufficient secretion of this adrenaline. And then there is one more this hormone that is called a thyroxine. It is secreted by thyroid gland. It regulates carbohydrate, fat, and protein metabolism, and its deficiency will cause goiter, or goiter we can see it is a deficiency of iodine, because this is mostly this is the main important ingredient or substance used in this. So then there comes this growth hormone, or GH, and thyroid stimulating hormone, TSH. So these both are secreted by pituitary gland. Like we have stated this. Here is this hypothalamus. It regulates all the hormones, and then there is this pineal gland, and there is this pituitary gland. So these are pituitary gland, and it is essential for normal growth. And if there is high concentration of these growth hormones, it will lead to gigantism, like the person will become like that great Khali. Then like that example, it's just analogy for that. And if there is this dwarfism, and this dwarfism is due to low concentration of these growth hormones. So that means if any imbalance is created in the secretion of growth hormones, we get two types of disease can be the result for that. And then there is this insulin. It is secreted by, actually it is secreted by beta cells of pancreas, and it regulates blood sugar level. That means its deficiency will lead to diabetes mellitus, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ब्लड शुगर की होती है ब्लड में, एंड उसकी वजह से विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ जाती है, वो ज़्यादा मोटा हो जाता है, इट बिकम्स वेरी थिक, एंड देन it becomes very difficult for blood to flow. जब वो फ्लो करना कम, जब उसकी स्पीड कम होगी, उसकी फ्लोइंग स्पीड, देन वी कैन से this disorder is called a diabetes mellitus. And there is one more concept of diabetes insipidus. When there is frequent this urination occurring in a person, that disease is called diabetes insipidus. And keep it in your mind, diabetes insipidus जो है वो kidney patients में होता है, it's not due to pancreas. ठीक, उसके बाद है melatonin. It is secreted by pineal gland, and आपको पता ही है pineal gland जो है it is also called a third eye of human being, or we can say जो ये gland है, it is very much important gland, because हमारी body में जो third eye है, this pineal gland acts as third eye. It secretes a melatonin, this is called a sleeping hormone, जिससे sleep cycle को ये control करता है. उसके बाद और दो glands हैं which are different in male and female. Males में usually क्या होता है, testosterone, जिसमें testes होते हैं glands, they secrete testosterone, and females में ovaries हैं which secrete this estrogen. If you can want to take any screenshot, you can. Now we'll come to our next hormone in males. Males में क्या होता है, males में testes एक gland होता है, males में testes 6 on, males में testes, and these testes ये gland हम testosterone हार्मोन ही लिखते हैं, क्योंकि हम हार्मोन ही लिखते हैं. आइए, testosterone हार्मोन is secreted by टेस्टिस, इनको टेस्टिस secrete करते हैं, ठीक. एंड इनकी वजह से ये जो इनकी फंक्शन है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब वो व्हेन दे रीच द एज ऑफ एडोलेसेंस. और उसके बाद एंड इसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से इसमें मेल कैरेक्टर्स बॉय में डेवलप हो जाते हैं, लाइक ग्रोथ ऑफ द
hairs, facial hairs under armpits and some other portion of the body, and that voice it becomes little bit bulging, and girls में थिक उसमें वो पिच चेंज होता है, एंड देन गर्ल्स में क्या है, इनमें ईस्ट्रोजन it is secreted by ovaries, and इनमें भी सेम है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स, ठीक, at the age of this puberty. So these were some respective hormones and these glands जो हम पढ़ते आए हैं, और keep this in your mind, जो pancreas हैं when it secretes insulin it will be included in this in the gland part, and it is both, it is heterocrine gland because it's involved in it secretes insulin, and sometimes it is also having that pancreatic juice जिसमें trypsin, amylase and lipase होता है, so it acts both as exocrine as well as endocrine gland. Now we'll come to coordination in plants. अब आपने देखा होगा ह्यूमन्स में और एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन होती है ड्यू टू नर्वस सिस्टम, बट प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम. प्लांट्स में केमिकल्स रिलीज होके कुछ हार्मोनल इनमें केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंड ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस केमिकल्स, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ दिस केमिकल्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज पॉसिबल, अदरवाइज नर्वस सिस्टम का कंट्रोल इनमें नहीं है. तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हम हेडिंग डालते हैं फिर coordination in plants. Unlike animals, plants do not have nervous system usually because they use some chemical means to control and coordinate. So plants use some chemical means for control and कोऑर्डिनेशन. अब प्लांट्स में क्या होता है, इनमें दो किस्म के मूवमेंट्स होते हैं. पहला किस्म मूवमेंट ये है जिसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, एंड सेकंड टाइप इज नॉस्टिक मूवमेंट्स. सो प्लांट्स मूवमेंट्स इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट भी मूवमेंट शो करेगा, लोकोमोशन तो नहीं करता, इट इज स्टैंड स्टिल, और इसमें क्या है, मूवमेंट इन प्लांट्स ओकर्स वाया टू वेज, दो तरीके से इसमें मूवमेंट होता है, ठीक. तो पहला क्या है, ट्रॉपिक मोमेंट, दूसरा क्या है, नॉस्टिक मोमेंट. अब ये दो किस्म के मोमेंट्स हैं. ट्रॉपिक मोमेंट को हम ग्रोथ डिपेंडेंट मोमेंट कहते हैं. इट्स कॉल्ड ग्रोथ डिपेंडेंट मोमेंट एंड इट्स ग्रोथ independent. इनमें these momentous, that is these momentous are because of growth, because of growth, यानी ग्रोथ की वजह से हैं ये मोमेंट्स, इन मोमेंट्स का कारण ही है ग्रोथ. और ये जो ये मोमेंट्स हैं, these momentous are directional momentous, जहां से भी स्टिमुलस मिलेगा वही से डायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्शनल मोमेंट्स, ठीक. और इसमें टाइप्स हैं विल स्टडी देम लेटर ऑन. 5 किस्म के टाइप्स हैं, लाइक फोटोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, उसके बाद थर्मोट्रॉफिज्म एंड हाइड्रोट्रॉफिज्म. दीज आर 5 टाइप्स ऑफ दीज ट्रॉपिक मोमेंट्स. उसके बाद हम नेस्टिक मोमेंट्स पे आते हैं. ये जो नेस्टिक मोमेंट्स हैं, दीज मोमेंट्स अब ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है, दैट मीन्स यूजुअली दे आर नॉट ग्रोथ डिपेंडेंट, यानी ग्रोथ विल नॉट अफेक्ट देम, growth will not be affected by these moments, stimulus or moments, और ये नॉन डायरेक्शनल हैं, these are नॉन डायरेक्शनल मोमेंट्स, ठीक. इसमें एक एग्जांपल है छुई मुई,
जिसको हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट, एंड इट बिलोंग्स टू माइमूसा फैमिली, माइमूसा फैमिली को ये बिलोंग करता है। एंड ये जो छुई हुई प्लांट है, जब हम इसको टच करते हैं, इस पे ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता, बट इट स्टार्ट ड्रूपिंग, ये थोड़ा सा वो ड्रूप हो जाता है, इसके लीव्स दे स्टार्ट ड्रूपिंग। लाइक सपोज अगर ये कुछ इस तरीके से हैं इसके लीव्स, तो ऐसे क्या होता है, इट्स लीव्स दे स्टार्ट ड्रूपिंग, इनके लीव्स में क्या होता है, ड्रूपिंग होती है, ये बंद हो जाते हैं, ऐसे वाइंड अप हो जाता है, इसके वो लीव्स थोड़े से वो ड्रूपिंग हो जाते हैं। सो दैट मीन्स इसको टच करने से, दैट मीन्स इट सेज टच मी नॉट, डोंट टच मी, सो वंस यू टच इट, इट्स लीव्स स्टार्ट ड्रूपिंग। सो दिस द एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मोमेंट, दैट मीन्स ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता, बट इस प्लांट के लीव्स, इसके स्ट्रक्चर पे, इसके मॉर्फोलॉजी पे थोड़ा सा असर पड़ता है, इट स्टार्ट्स ड्रूपिंग आउट इसके लीव्स। अब हम सीधा आते हैं, दैट इज इट्स नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। अब सीधा ट्रॉपिक मोमेंट्स के 5 टाइप्स पे आते हैं, विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब ये जो ट्रॉपिक मोमेंट हैं, ट्रॉपिक मोमेंट इज द ग्रोथ डिपेंडेंट मोमेंट, एंड इसमें 5 टाइप्स इसके क्या हैं, इसके 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज फोटोट्रॉपिज्म, फर्स्ट टाइप इज फोटोट्रॉपिज्म, और फोटोट्रॉपिज्म में क्या है, इट्स मोमेंट इज ड्यू टू लाइट, इट्स मोमेंट इज ड्यू टू लाइट, बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से इसमें क्या होती है, इसमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट मीन्स इसमें ग्रोथ भी होती है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइट, लाइट की वजह से, ठीक। दूसरा टाइप है जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म में क्या है, इसका मूवमेंट जो है इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, दिस मोमेंट और इट्स मोमेंट, सिंपल हम लिख सकते हैं, दिस मोमेंट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट मीन्स ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी तो नीचे खींचती है, दैट मीन्स सम प्लांट्स दे टर्न डाउन वर्ड्स, वो नीचे आके इनमें ग्रेविटी की वजह से वो रेंगते हैं, तो उसमें भी उनका मोमेंट, यानी रूट्स, फॉर एग्जांपल रूट्स, एक प्लांट की रूट्स, उनमें जब ग्रोथ होगी तो वो ज़्यादा नीचे जाएंगे, दैट मीन्स वो ग्रेविटी के, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। उसके बाद नेगेटिव भी होगा, देयर माइट बी नेगेटिव आल्सो, एंड इन दैट नेगेटिव ट्रॉपिज्म उसमें अपोजिट होगा, मीन्स सम मोमेंट्स आर नेगेटिव मोमेंट्स, सो देयर आर पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट्स आल्सो इन दिस जियोट्रॉपिज्म और फोटो। तो तीसरा जो है, थर्ड वन इज दैट इज कीमोट्रॉपिज्म, दैट इज कीमो स्टैंड्स फॉर केमिकल्स, तो दिस कीमोट्रॉपिज्म जो है, इट्स द मोमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स, दैट मीन्स जस्ट लाइक ग्रोथ ऑफ दैट पोलन ट्यूब की ग्रोथ टुवर्ड्स ओव्यूल, फीमेल और मेल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन द फ्लावर। सो इट इज दिस मोमेंट is because of chemicals, इसमें एग्जाम्पल क्या है, यानी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स, कहाँ जाता है वो पोलन ग्रेन, वो पोलन ट्यूब में, इट गोज टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक, it goes towards ovule, and this growth of this pollen tube is it's due to the chemicals, तो chemicals की वजह से that's called chemotrophism। उसके बाद hydrotrophism, it is very easy to understand, hydro means water, hydrotrophism, it is the movement towards water, this movement is towards its movement बिकॉज ऑफ वाटर, या टुवर्ड्स वाटर, वाटर की ओर, तो इसमें आप बहुत सारे जो भी वाटर में प्लांट्स उगते हैं, दैट दे आर ड्यू टू दिस।
दैट मीन्स वाटर का फ्लो जहाँ से होगा वहीं से प्लांट भी ग्रो करेगा और उसमें ग्रोथ होगी। तो दिस ग्रोथ इज ऑल्सो ए इज ट्रॉफिक ग्रोथ। उसके बाद लास्ट वाला है दैट इज फिफ्थ वाला, दैट इज थर्मोट्रॉफिज्म। इसको हम थिग्मो भी कहते हैं, थिग्मो, THIGMO, थिग्मोट्रॉफिज्म। सो ये थर्मो और थिग्मोट्रॉफिज्म जो है इट इज अ ग्रोथ टुवर्ड्स व्हेन इट डिपेंड्स ऑन हीट। सो इट इज ड्यू टू हीट, so its moment due to towards heat. So this moment is towards heat and it is the growth of tendril across that wooden block, जो भी होगा वुडन का कोई ब्लॉक होगा या पिलर होगा उसमें। तो ये थिग्मो क्या है, इसमें आप ऐसे समझो लाइक जो होते हैं ना वो बीन्स के प्लांट्स, ठीक, जिनको हम क्रीपर्स कहते हैं, यूजुअली इसमें क्रीपर्स आएंगे, क्रीपर्स। दे ग्रो टूवर्ड्स, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो यहाँ पे एक स्टैंड है, जिससे स्टैंड, अब यहाँ से क्रीपर ग्रो करेगा, ठीक, तो यहाँ पे ये क्रीपर आएगा, इट स्टार्ट्स वाइंडिंग अक्रॉस दिस, इस पे वाइंड करके यूजिंग दिस सपोर्ट, इसकी वजह से ये ग्रोथ करता है जस्ट लाइक दिस क्रीपर्स, यानी क्रीप करके। दैट मीन्स ये खंबा है, इसमें क्रीपर आएगा, ये क्रीपर इस पे चढ़ चढ़ के ये प्लांट को ग्रोथ मिलेगी। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड थर्मोट्रॉपिज्म। अब हम आते हैं प्लांट्स के हार्मोन्स पे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।